Hi learners, how are you? So today we are going to study about the Indian desert. जैसा कि हम इस वीडियो सीरीज में इंडियन फिजिकल फीचर्स या इंडियन फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो आप ऑलरेडी वी हैव स्टडी अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स and the peninsular plateau, and now the fourth physical division or the next physical division that we are going to study today is the Indian desert. As it is said that India has the diversity in unity or unity in diversity. So there are the वेरियस डाइवर्सिटीज इन द इंडिया इन द फिजिकल फीचर्स ऑल्सो. जो इंडिया की लैंड फॉर्म है या जो इंडिया का लैंड है उसके अंदर भी कई तरह की फिजिकल डाइवर्सिटीज हैं. और हम कह सकते हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी फिजिकल फीचर इज फाउंड ऑन द इंडियन लैंड. ऑलमोस्ट जितनी भी अर्थ की फिजिकल फीचर्स है वह ऑलमोस्ट सारी की सारी इंडिया में पाई जाती हैं. तो जो नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं आज इंडियन डेजर्ट. अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन डेजर्ट का जो लोकेशन है दैट इज इन द राजस्थान, और द लोकेशन वी कैन से ऑन द मैप ऑफ द इंडिया इट लाइज हियर. जैसा कि आपने ये दिख रहा है, दिस इज द इंडियन डेजर्ट. दिस इज द पिक्चर ऑफ द India from the satellite, or it is the satellite image of the Indian picture, India. So you may be able to see that this area from the space to its color is different. It's looking like a brown, or when we see it from the space it looks vegetation free. जो ये दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? vegetation free. तो इस एरिया के अंदर जो यहाँ से स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट इधर नीचे की तरफ तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाता है. यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है. इसके इधर नॉर्थ में अगर हम देखते हैं या जो इसके ईस्ट में अगर हम देखते हैं तो वह इंडियन प्लेन्स आ जाते हैं और ऊपर हिमालयन माउंटेन्स हैं. तो जो ये वाला एरिया है ये है इंडियन desert. And now we will be studying about the physical features of the Indian desert. और so first we will see the extension. अब यहाँ पे हम देखते हैं extension और इसके कुछ features. To the north of the Aravalli Hills, जैसा कि अभी हमने इस मैप में देखा था, अभी यहाँ पे देखते हैं इस मैप के, यहाँ पे आपको क्या है, ये एक अरावली रेंज है जो आपको दिख भी रही है ये इस तरह से. जो यहाँ पे एक जो ये लाइन सी बनी हुई है ग्रीन सी, ये है अरावली रेंज. इस अरावली रेंज के नॉर्थ में, सो नॉर्थ टू द अरावली रेंज लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. जो अरावली रेंज के नॉर्थ में, अरावली रेंज के साउथ में तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और जो नॉर्थ में है वह है द इंडियन ग्रेट डेजर्ट. इट इज द लैंड ऑफ undulated topography dotted with longitudinal dunes and the barchans. जो इस लैंड का जो या इस एरिया का जो ये डेजर्ट है, अगर इसकी हम फिजिकल फीचर्स या जो इसकी जो लैंड फॉर्म या जो फिजिकल फीचर की बात करें तो इट इज़ द undulating topography and it is dotted with the longitudinal dunes. longitudinal dunes मतलब जो अगर इस पे आप देखोगे तो longitudinal dunes हैं. dunes are the means the hips or the just like the hills of the sand. जब हवा के साथ में जो यहाँ पे हवा, because in the summers the speed of the wind is very high, so with the wind the desert, the sand means the sand, the wind with the pressure of the wind pressure, the sand means flow or blows with the, और वो जब एक जगह पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक तरह से इस तरह का, जो अगर आपको इसमें देख पा रहे हैं तो ये इस तरह के सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. ये यहाँ पे ये सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. और बारचन्स उसका जो दिस इज ऑल्सो द फिजिकल feature of this area.
दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। और जो इस रीजन के अगर हम रेनफॉल की बात करें तो वह 150 mm से भी कम रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर। हेंस it it has arid climate with low vegetation cover, and because of the shortage of water, because of the shortage of the rainwater and the shortage of the low amount of the water, this area is arid. Arid means dry, and because of the dryness, because of the shortage of the water, the vegetation is also very rare. इस एरिया के अंदर जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम होते हैं, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव द favorite climatic conditions for the this vegetation. If you are able to see this land is the desert land of the Rajasthan. In this you see that the hardly there is vegetation, and if you see the any type of the vegetation, see इस तरह की जो bushes होती हैं, which are also most of the time in the year are the green leaf free, means they do not have the leaves and like the shrubs, dry shrubs. It is because of these climatic characteristics features that this is also known as the Marusthali. And because of these physical features or the characteristics, which characteristics? Presence of the dunes and the barchans, low amount of the water or low quantity of the water, because of the less amount scarcity of water or the lack of the water, there is no vegetation. And because of these regions or because of these characteristics, this area is also known as the Marusthali. Okay, now if we see the next about this, see, it is believed that during the Mesozoic era this region was under the sea. And if we study about the फॉर्मेशन ऑफ दिस मरुस्थली, अगर हम देखें कि इस मरुस्थली का या जो ये डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट है, इंडियन ग्रेट डेजर्ट, इसका हाउ इट केम इन एग्जिस्टेंस, मतलब ये कैसे बना। तो अगर इसके व्हेन वी स्टडी अबाउट द फिजियोग्राफिक ऑफ दिस, it is believed that during the Mesozoic era this region was under the sea. And if you have studied about the plate tectonic, अगर आपने अभी प्लेट टेक्टोनिक के बारे में अगर आपको पता है या आप जानते हैं तो जो इंडियन प्लेट जो इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा था, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है और जो ये वाला एरिया था, यहाँ पे एक Tethys Sea था. It is believed that there was the Tethys Sea, and this desert was also the part of that. So उस टाइम पे this land was under the sea, मतलब जो लैंड है, जो ये मरुस्थली है, उस टाइम ये समुद्र के नीचे का सरफेस था. This can be corroborated and it can be proved that by the evidence available. मतलब ये कैसे कह सकते हैं कि ये लैंड समुद्र के नीचे थी, तो इसके जो प्रूफ हैं वह आज भी हम वहाँ पे पाए जाते हैं. क्या प्रूफ है? फूड फॉसिल्स पार्क एट द अकाल फॉसिल पार्क, जो इन द जैसलमेर और एंड अराउंड इन द जैसलमेर देयर इज द हुड पार्क, हुड फॉसिल पार्क, जो वहाँ पे इस लैंड के नीचे या जो इस ज़मीन में जो लकड़ी के टुकड़े मिले हैं या जो कुछ फॉसिल फ्यूल्स मिले हैं या जो फॉसिल मिले हैं, दैट इज़ टू बी बिलीव्ड ऑफ द मेसोजोइक एरा. वहाँ के जो वहाँ पे एक अकाल फॉसिल पार्क हैं और मेरीन तो एंड मेरीन डिपोजिट्स, जो जैसलमेर के आसपास के का एरिया में जो चीज़ें मिलती हैं, जो वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं कि जो मेरीन डिपोजिट्स है, मतलब समुद्र के नीचे पाई जाने वाली चीज़ों का वहाँ पे डिपोजिट्स मिलता है, और उस ज़माने की वहाँ पे
लकड़ियाँ या जो समुद्र के नीचे पाई जाने वाले चीज़ों का डिपॉजिट मिलता है। इससे ये कहा जा सकता है कि इट इज़ below the means in the Mesozoic era, this land was under the sea. And here are the some of the pics of the Akal fossil पार्क। जो ये आकल फॉसिल पार्क है, इसके नीचे की जो ये पिक्चर्स आपको कुछ दिखाई दे रही है, ये उस टाइम की या जो इस पार्क के अंदर आपको कई सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो कि इकट्ठा की हुई हैं, जो समुद्र के नीचे पाई जाने वाली चीज़ें हैं। इसलिए ऐसा कहा, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट दिस एरिया वाज अंडर द सी ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा। And if we the age of these fossil fuels is estimated to be 180 millions ago. If we see the drainage system and the elevation of the in the Indian desert, it can be divided into the two parts or the two divisions based on the elevation of the Indian desert. The north part of the desert, here if you see, the north part of this desert has the slope towards the Sindh, or the elevation in the north is from south to north. So the water or the slope of the slope of north part is towards the Sindh. And if we see in the south, अगर हम यहाँ पे इसका साउथ में बात करते हैं, तो जो साउथ का जो स्लोप है, that is towards the run of Kutch. So we can say that it is based on the slope, it is divided into the two divisions. The north part or the north region of this Indian desert has the slopes towards the south, towards the north in Sindh, and the south part of this region has the slope towards the run of Kutch. Same is the water drainage system. The north parts rivers or the water flows towards the south and towards the Sindh, and the south parts water flows towards the Sindh. And if we talk about the rivers, अगर हम इस एरिया के रिवर्स की बात करें तो the rivers are there is no such a river which flows throughout the years or most of the time of the year. जो ज़्यादातर रिवर है, most of the rivers are those rivers are called the ephemeral rivers. So इस एरिया की जो most of the rivers हैं वो ephemeral rivers हैं, because those rivers last only for the few time or for the very short time. जो इस एरिया की जो ज़्यादा के रिवर्स हैं वो क्या होता है कि साल में कुछ ही महीनों के लिए या कुछ ही दिनों के लिए फ्लो करती है, because and that's why they are called the ephemeral rivers. The main river is the Luni river. The Luni river flowing in the southern part of the desert is of this some significance. Means mainly there are no such a big river or there is no such a significant river, but Luni is the only river, or Luni has the little bit importance on it, has the some significance because this is the river. And the most of the land of this area or this is the run of Kutch. जो run of Kutch है वो इस तरह का दिखाई देता है। तो यहाँ पे पानी के अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर इज द वेरी मच शॉर्टेज ऑफ द वाटर, एंड वाटर अगर जो कुछ रिवर्स हैं वह भी फ्लो होती हैं तो वह नीचे जमीन के नीचे ही फ्लो होती है। नाउ this is the continued part of the drainage system. The low precipitation and high evaporation makes it a water deficit region, and in this region, because there is the shortage of the water, there is very low rainfall, and because of the
high weather, high temperature, this area is the water deficit region. जो ये region है, this region has the shortage of the water. Okay, so because of the high amount of the evaporation or high rate of evaporation and the low precipitation or low rain, this area is the water deficit region. There are some streams which disappears after flowing for some distance and present a typical cases of inland drainage by joining a lake or a playable. Yeah, it's a playas. So most of the streams in this region, there are some streams, मतलब कुछ नाले होते हैं, छोटे नाले होते हैं, which flows for a short distance and after they disappear in the land, and by this and it is the example of the इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम. जो यहाँ के ज़्यादातर जो रिवर्स हैं जिसको हम इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, दैट दीज स्ट्रीम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम. बिकॉज दीज स्ट्रीम्स जॉइंस द प्लेयास और द स्मॉल लेक, जो छोटी छोटी लेक्स होती हैं, या जो प्लेयास मीन्स द ड्राई एरिया लाइक रन ऑफ कच्छ, वो वहाँ पे जाके उनको join करते हैं and they disappear. If you see some these pictures like this, the streams flows for the some distance and after that they disappear. And if you see here in this map or in this picture, this is the example of the lake and this is the सांबर लेक. तो इस तरह से पूरे एरिया के अंदर कुछ ही लेक्स होती हैं या जो कुछ ही पानी का अमाउंट, जो प्लायास होता है जो कुछ समय के लिए तो पानी रहता है वहाँ के, उसके बाद में वो पूरी तरह से सूख जाते हैं. द लेक्स एंड द प्लायास हैव brackish water which is main source of obtaining salt, and these lakes and the playas, they have the salty water and they have the brackish water, means the salty water. The example of this is the Sambar lake, and in the south, if you see south, the run of Kutch, which is also the source of the salt. So these are the some of the features of the this area.